वक्ता को श्रोताओं के चेहरे गाइड करते हैं। हाँ जी। तुम क्या बोलो और क्या छोड़ दो। शिवाजी, काफी लोग हो गए, 50+ हो गए। हाँ सर, शुरू करते हैं मेरे ख्याल से। आप लोग इसको लाइव स्ट्रीम कर रहे हो ना वकुला? यस मैम, यूट्यूब पे। हाँ, तो शुरू करो। शुरू कर सकते हैं आई थिंक। मैम शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ शुरू करें। So, Dr. Mahesh Chandra Sharma ji, Honorable Mr. Justice L. Narasimha Reddy, Professor in charge Dr. Alka Chawla ma'am, Assistant Professor Dr. Seema Singh ma'am, Faculty Convener of TDS, and all the students who have joined us virtually. I'd like to request you all to turn your cameras and to mute your mics for a better experience. Good evening, everyone. I, Sejal Chaudhary, along with Ujjwal Kant Pandey, we welcome you all on behalf of the Debate and Discussion Society. We at DDS believe in encouraging critical analysis, exchange of ideas, and constructive dialogues through a host of events among our peers. It gives us immense pleasure to organize such seminars and events covering diverse aspects of our society and legal field. These events include the CLC Opinion Project, TCOP, an inter-debating platform of CLC Town Hall Series, an interactive panel discussion platform, Abhigyan, the lecture series, and Courtroom Legends, where our peers interact with legendary counsels who have mastered the craft of advocacy. On 26 November 2023, that is today, on the occasion of 76th Constitutional Day, it is a delight to host a panel discussion on the pertinent topic Fraternity, a constitutional imperative. आज हमारे मध्य में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी उपस्थित हैं। आपका व्यक्तित्व किसी से छिपा नहीं है, फिर भी मैं आपका परिचय संक्षिप्त में देना चाहूंगा। आप पूर्व में राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं तथा आप आज की राजनीतिक परिदृश्य के एक अग्रणी व्यक्ति हैं। आप वर्तमान में एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष भी हैं। आपके हिंदी साहित्य में योगदान के लिए 14 सितंबर 1992 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व वार्ता, अपना देश और अन्य प्रमुख समाचार पत्रों में आपने लेखक के रूप में योगदान दिया है। आपने दीनदयाल उपाध्याय, कर्तव्य एवं विचार, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अखंड भारत, रिविजिटिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन तथा 15 खंडों में हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित पंडित दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय के आप संपादक हैं। 2008 से 2009 राजस्थान विकास एवं निवेश बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आपने पदभार संभाला। 1999 से एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष के रूप में आप कार्यरत हैं। मैं आपका हम सभी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद मित्र। हम सभी माननीय न्यायमूर्ति श्री एल नरसिम्हा रेड्डी जी की उपस्थिति से गौरवान्वित हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। माननीय न्यायमूर्ति श्री एल नरसिम्हा रेड्डी जी 44 वर्षों के व्यापक अनुभव के कानूनी क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वर्तमान में तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थता के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा श्रीमान ने निम्नलिखित विभिन्न दायित्वों में कार्य किया है। 2023 में बंगाल रामनवमी राइट पे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में का नेतृत्व किया। आपने 2018 से 2021 तक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के चेयरमैन के रूप में कार्य किया। हैदराबाद विश्वविद्यालय में आपने वाइस चांसलर के रूप में अपना पदभार संभाला। पूर्व सैनिक एवं वाइस चांसलर नहीं है जी, I was chancellor and that term is over now. That is not chancellor. ओके, आपने चांसलर के रूप में अपना पदभार संभाला। पूर्व सैनिक के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना के कार्यान्वयन को देखने वाली न्यायिका समिति के प्रमुख के रूप में आपको नियुक्त किया गया। 2015 में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से आप सेवानिवृत्त हैं। आपने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में के न्यायाधीश के रूप में 2001 से लेकर 2015 तक आपने कार्य किया। आपके मार्गदर्शन के लिए आपका
धन्यवाद। Now, to welcome our guest and to deliver the welcome address, I would now like to invite Professor in charge, Dr. Alka Chawla, ma'am. Over to you, ma'am. Thank you. Good evening to everyone. Very, very warm welcome to our esteemed speakers, retired Chief Justice of Patna High Court, Mr. Justice L. Narasimha Reddy. Sir, we are sorry. One thing which I always tell students is that you should do your homework well. And especially when it is a case of guests, then one has to very clearly know as to who they are. Little bit of mistake by Pandiji doesn't matter. They're here to learn. So this is how young people learn. We also have amongst us, as we all know, Dr. Mahesh Chandra Sharma ji, and he has been a columnist, a writer, both in newspapers, periodicals, weeklies, and he's done so much of research. Everybody knows about it. We all know that Constitution Day, which is commonly referred to as Samvidhan Divas, it's an annual observance in our nation, and this takes place on 26th of November. Today being a Sunday, so at least, with this virtual mode, we can all be together. और जैसे कि महेश चंद्रा जी ने कहा, बहुत सारी हमारी एनर्जी भी रिजर्व हो जाती है अगर हमको ट्रैवल करने को नहीं मिलता और हम अपने घर में ही बैठ के सब आपस में विचार कर सकते हैं. And this occasion, it serves to remember the formal adoption of the Constitution of India by the Constituent Assembly of India on November 26, 1949. And we all know that we adopted our Constitution on 26th of January, 1950. It is amazing to know that the Constituent Assembly took 2 years, 11 months, and 18 days to accomplish this mammoth task. And I would like to tell our speakers that that I think Seema ji will be in a better position to tell. बहुत जल्दी स्टूडेंट्स कुछ एक करने वाले हैं कार्यक्रम जिसमें वो बताएंगे how Constituent Assembly speakers they give their views. And many of, when we teach Constitution and we teach the constitutional law to them, that part remains missing a number of times. So it would be an occasion where the students would be listening to the participants. And I think she's made it as a competition also, so that awards can also be given. So we have a vibrant teacher convener working for the Debate and the Discussion Society. We all know that Constitution, serves as the foundational cornerstone, providing a source of stability and resilience. The foundation of a robust and a harmonious society lies on this particular principle. The Indian Constitution extends beyond a mere compilation of articles and schedules. It has been characterized as a transformative constitution, denoting its inherent capacity to embody a forward-looking perspective and contemplate future developments. Fraternity is one of the constitutional principles, which is the foundational ideal that is pursued in conjunction with liberty and equality, with the ultimate goal of fostering societal peace and unity. The framers of our Indian Constitution, they acknowledge the significance of fraternity within a society characterized by entrenched hierarchical socioeconomic disparities. And today, that is why we thought it would be a very, very relevant topic to listen to our esteemed guests. There have been why we chose this topic. Perhaps I was talking to the students, and they said that the various factors that are posing challenges to constitutional fraternity are, I wouldn't say disagreements and misconceptions, because disagreements, unless and until disagreements are there, we cannot reach to some kind of theory. But there are, in India, it's a peculiar country, it's a unique country where we have cultural differences and yet there is a unity which is present. But what we always aim at, we want to do away with, I wouldn't say differences, but if there are clashes, if there are caste-based differences, if there are economic gaps between different sections of the society, political ideology is very good to have a difference, because only when we have different perspectives can we reach to some kind of unanimous goals. So keeping all these things in mind, we thought that we will have great two speakers amongst us.
So I again welcome our guests, Mahesh Chandra ji and Justice Narasimha Reddy. And we आपका सत्कार है और हम चाहते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे टीचर्स को you speak to them and make them understand this very important ideal. Thank you so much and welcome again. You took your time out of your busy schedules. We know that you're very, very busy. Thank you so much. धन्यवाद मैम. Thank you, ma'am, for your address. I would once again like to welcome Dr. Mahesh Chandra Sharma ji, Honorable Mr. Justice L. Narasimha Reddy, Professor in charge Dr. Alka Chawla, Assistant Professor Dr. Seema Singh, and faculty members Dr. Rajesh Kumar and Dr. Atma Yadav ma'am. So, the preamble is a concise reflection of the constitutional ideals as well as the parameters within which the Constitution shall operate. The principles outlined in the preamble have their sources in several constitutions of the world. The idea of fraternity finds mention in the preamble of the Indian Constitution, where fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, is declared to be a constitutional goal. प्रेम्बल संवैधानिक आदर्शों के साथ साथ उन मापदंडों का संक्षिप्त प्रतिबिंब है जिनके भीतर संविधान संचालित होगा. प्रस्तावना में उल्लेखित सिद्धांतों के स्रोत दुनिया के कई देशों में है. बंधुत्व के विचार का उल्लेख भारतीय संविधान के प्रेम्बल में किया गया है, जहां व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को एक संवैधानिक लक्ष्य घोषित किया गया. बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर राष्ट्रीय चेतना के उन नायक थे. समाज को खंडित दृष्टि से देखने से राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता नहीं बनी रह सकती है. यह वे सिर्फ भाषणों में नहीं कहते थे, अपितु उस पर अमल भी करते थे और निरंतर काम करते थे. वे जीवन भर राष्ट्र की एकता, स्वतंत्रता और उसके लिए आवश्यक तत्वों के लिए संघर्ष करते रहे. संविधान सभा में दिए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा था कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता के आधारभूत है. आज बंधुता के आधार पर ही संपूर्ण समाज को संगठित किया जा सकता है और स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है. भगवान बुद्ध उनका धम्म में वे लिखते हैं, राष्ट्र के खड़े होने के लिए जैसे दूसरे वैसे मैं, जैसे हम वैसे ही दूसरे. इस विचार से दूसरों के साथ समरस हो जाओ. उन्होंने समझाया, बिना भाईचारे के स्वतंत्रता और समानता चीजों का स्वाभाविक क्रम नहीं बन सकती है. अंबेडकर जी कहा करते थे, स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये मेरे जीवन के तत्वत्रयी हैं. लेकिन वे कहते थे कि ये तत्व मैंने फ्रांसिस क्रांति से नहीं लिए, इनकी जड़ें भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा में है. बंधुता के बिना सामाजिक समरसता नहीं हो सकती, जिसकी कानून से नहीं, संस्कार और व्यक्ति निर्माण से आ सकती है. भारतीय संस्कृति सभी में समाहित करती है. भारतीय संस्कृति का बीज मंत्र बंधुत्व की भावना है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक को समाहित करती है. हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम को मेन आधारभूत माना जाता है. हमारे संस्कृति के आदर्श में हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा दिया जाता है कि सभी लोग सुखी रहें. ये बंधुत्व के आधारभूत पे ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है. At this juncture, it gives us utmost joy to celebrate the Constitution Day with the words of eminent personalities who have joined us today. I would request you all, if you have any queries, to drop them in the chat box. We would love to take them at the end of the sessions. अब मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा. श्रीमान महेश चंद्र शर्मा जी अपने उद्बोधन से मार्गदर्शन कर हम सभी को लाभान्वित करें. बहुत बहुत धन्यवाद. संविधान दिवस पर आप सबका बहुत अभिनंदन. आदरणीय न्यायमूर्ति नरसिम्हा रेड्डी जी, डॉक्टर चावला, डॉक्टर सीमा जी, अन्य प्राध्यापक एवं छात्र छात्रा भाई बहनों, बहुत ही अच्छा विषय रखा है. यह विषय न केवल अच्छा है, यह वह विषय है जिस पर सामान्यतः चर्चा नहीं होती. जो हमारी प्रस्तावना के 4 स्तंभ हैं, पहला है न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समानता, चौथा है बंधुत्व.
हम सबको मालूम होगा कि जब पहला ड्राफ्ट गया था तब उसमें बंधुता शब्द नहीं था, और इसलिए ये उज्ज्वल कांत ने ठीक ही कहा कि दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी ने इसको डाला और संविधान सभा में इसको स्पष्ट भी किया, स्पष्ट किया कि मैंने ये इन शब्दों का जो उल्लेख यहाँ हुआ है वह विख्यात फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं लिया है, मैंने भारत की परंपरा से धम्म पद से लिया है। और बंधुता यह विशेष तत्व है। मैंने कोशिश की जानने की कि इस शब्द पर या इस शब्द के इर्द गिर्द संविधान सभा में कोई बहस हुई क्या, मैं नहीं खोज पाया। संविधान सभा में इस पर कोई बहस नहीं हुई। संविधान सभा में और पिछले 75 वर्षों में अनेक बार इस शब्द का प्रयोग भाषणों में होता है, और सर्वाधिक प्रयोग अभी आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस शब्द का करते हैं। यह महत्वपूर्ण शब्द है और किसी भी आधुनिक समाज के लिए यह एक मुश्किल अवधारणा है। मुश्किल अवधारणा क्यों है? क्योंकि जब न्याय की बात करते हैं तो सामान्यतया एक मानवीय स्वभाव है कि वह न्याय की बात कम करता है और अन्याय करने वाले के खिलाफ अधिक आग उगलता है। जब आप समाज को न्यायी और अन्यायी में विभक्त कर देते हैं तो बंधुता आहत हो जाती है। और जब सामान्यतः जो समाजवाद की अवधारणा है, जो वर्ग संघर्ष की अवधारणा है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा और बंधुता की अवधारणा क्या साथ साथ जिंदा रह सकती है? वैसे ही जो कैपिटलिज्म है उसकी अवधारणा है द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है वो सर्वाइव करेंगे, तो अनफिट का क्या होगा? अनफिट और फिट में बंधुता रह सकती है क्या? और इसलिए आज का जो आधुनिक जगत है उसका जो मस्तिष्क है, यह मस्तिष्क पश्चिम की इन दो धारणाओं से बहुत गहरे से प्रभावित हुआ है। और यह प्रभावित होने के कारण संविधान में बंधुता शब्द के होने के बावजूद सामान्यतया राजनीतिक नेताओं के वक्तव्य में, संसद की बहस में या हमारे न्यायिक उपक्रम में, जस्टिस नरसिम्हा ने इसका ठीक हम जानकारी देंगे, मुझे नहीं मालूम है कि इस बंधुता के अधिष्ठान पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा न्याय दिया है। जब हम न्याय भी करते हैं तो हमारा संदर्भ ह्यूमैनिटी होता है, मानवता होता है, मानवीय संवेदना होता है। तो मानवीय संवेदना और मानवता एक व्यापक संदर्भ है, पर उस मानवीय संवेदना और मानवता को जो एक विशिष्ट नाम बंधुता दिया है, यह नाम इस बात को व्यक्त करता है कि हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समुदाय, इसका परस्पर रिश्ता है, नाता है। और वह रिश्ता क्या है? वह रिश्ता बंधुता का है। वह रिश्ता बंधुता का है। यह ठीक कहा अंबेडकर जी ने कि उन्होंने धम्म पद से लिया है। सामान्यतया इस रिश्ते को भी हम डालते हैं मानवता पर, कि हमारे रिश्ते मानवीय रिश्ते। यह जो बंधुता कॉन्सेप्ट है, इसके रूट्स कहाँ हैं, इसकी जड़ें कहाँ हैं? तो इसकी जड़ें हमारे
वैदिक साहित्य में है, जब ऋषि कहता है वेद में, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये धरती हमारी माँ है, हम इसके पुत्र हैं। तो पुत्रों का परस्पर रिश्ता क्या होता है? तो पुत्रों का परस्पर रिश्ता भाई का होता है। इसलिए माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या के मंत्र में निगडित है बंधुता। और यदि समाज का हर व्यक्ति आपके साथ एक रिश्ते का भाईचारा निभाता है, तो रिश्ते का भाईचारा निभाने पर वह अन्याय नहीं कर सकता। रिश्ते का भाईचारा निभाने पर वह आप पर शासन नहीं कर सकता। तो ये जो स्थितियां और समस्याएं हैं, जिसके कारण से मानव को आपस में संघर्ष की सिद्धांतिकाओं से जूझना पड़ा। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों ही संघर्ष को सैद्धांतिक लेजिटिमेसी देते हैं, विध्वंस को सैद्धांतिक लेजिटिमेसी देते हैं। और इसलिए डॉक्टर साहब ने ठीक कहा, बंधुता ही वह आधार है जिससे समानता आएगी। बंधुता ही वह आधार है जो हमें स्वतंत्र रखेगा। बंधुता ही वह आधार है जिसमें हम न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। इस आधार को पुष्ट करना, इस आधार को बलिष्ठ करना, यह काम पिछले 75 साल में हमारा जो सार्वजनिक जीवन है इसमें हो पाया है क्या, इसकी समीक्षा करना चाहिए। जब संविधान सभा की बहस हो रही थी, तब इसकी बहस में हुई थी कि हमारे संविधान का मुख्य आधार क्या हो। आज हमारे संविधान का मुख्य आधार फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों को माना जाता है। इस पर बहस हुई है सदन में कि मूल अधिकार बेसिक है या डायरेक्टिव और प्रिंसिपल्स बेसिक है। नीति निर्देशक तत्व बेसिक है कि फंडामेंटल राइट्स बेसिक है। तो स्वयं अंबेडकर इस मत के थे कि हमारी बेसिक अवधारणा संविधान की यह नीति निर्देशक तत्व होने चाहिए। पर बड़ी आबादी इसके पक्ष में थी कि फंडामेंटल राइट्स को बेसिक बनाना चाहिए। और इसलिए आप देखेंगे कि हमारे संविधान के संशोधनों में और हमारे न्यायिक निर्णयों में, संविधान के संशोधनों में और न्यायिक निर्णयों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई तत्व रहा है तो वह रहा है मूल अधिकार। मूल अधिकारों के इर्द गिर्द हमारे संविधान के संशोधन हुए हैं। मूल अधिकारों के इर्द गिर्द हमारे न्यायिक निर्णय हुए हैं। और इसमें जब चर्चा होती है, बात होती है, तो समानता का आग्रह जबरदस्त होता है। और उन स्थितियों पर हम टूट पड़ते हैं जो असमानता की कारक है। स्वतंत्रता का बहुत आग्रह होता है, उन स्थितियों पर हम टूट पड़ते हैं जिससे स्वतंत्रता आहत होती है। पर बंधुता का विलोम क्या है? भाईचारे का उल्टा क्या है? तो बंधुता का विलोम शत्रुभाव है, दुश्मनी है। और जब आप बात करते हैं
द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, उसमें एक प्रकार की दुश्मनी इनबिल्ट। जब आप बात करते हैं वर्ग संघर्ष की, तो उसमें एक दुश्मनी इनबिल्ट है। सर्व आहारा और सर्वहारा वर्ग भाई भाई की तरह नहीं रह सकते। और इन शब्दों के इर्द गिर्द हमारी राजनीति की सैद्धांतिकी गढ़ी गई है। आज हमारे मंचों पर इसके अनुकूल ही भाषण होते हैं, हमारी संसद में भी इस पर ही ये ज्यादा भाषण होते हैं। मुझे नहीं ध्यान आ रहा कि इस 75 वर्ष की यात्रा में भारत की संसद में कभी बंधुता को लेकर बहस की हो, कभी इसकी समीक्षा की गई हो कि प्रियम्बल में उपस्थित बंधुता शब्द, ये बंधुता शब्द, इसको क्या हमारे देश की राजनीति परिपुष्ट करती है? इस बंधुता शब्द को क्या भारत की न्यायपालिका परिपुष्ट करती है? इस बंधुता शब्द को क्या भारत की कार्यपालिका परिपुष्ट करती है? तो मुझे लगता है जो दृश्य उत्पन्न होगा वो आत्मालोचन करने लायक होगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमको समझाकर कहा था कि पश्चिम में स्वतंत्रता के धारक व्यक्तिवादी हैं, पश्चिम में समानता के धारक समाजवादी हैं। अंबेडकर कहते हैं मैं इन दोनों से असहमत हूं। तो हमको स्वतंत्रता, समानता और न्याय बंधुता के आधार पर चाहिए। समाज में बंधुता के रिश्ते को परिपुष्ट करना, बंधुता के रिश्ते को जगाना और उसके आधार पर देश का विधायन होना, कार्यान्वयन होना, न्यायन होना, इसकी आवश्यकता है। जब हमें लगता है कि इसकी आवश्यकता है और यह भी ध्यान में आता है कि यह जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, तो फिर आगे के रास्ते को खोजने की एक जरूरत महसूस होती है। मैं समझता हूं हर वर्ष आने वाला यह संविधान दिवस, हर वर्ष आने वाला यह संविधान दिवस हमको मौका देता है कि हम अपनी संवैधानिक यात्रा की प्रतिवर्ष समीक्षा करें। सोचें कि हमारी इस वर्ष की संवैधानिक यात्रा क्या रही, उसमें ऐसा कौन सा मुद्दा रहा जो मुद्दा हमें कष्ट देता है, वह कौन सा मुद्दा रहा जो हमें सुकून देता है। हम क्या करें कि कष्ट देने वाले मुद्दों का निरसन हो जाए और सुकून देने वाले मुद्दों को हम परिपुष्ट कर सकें। संविधान दिवस का मेरी समझ में इससे अच्छा अन्य कोई मंतव्य नहीं हो सकता। फ्रेटर्निटी या बंधुता, यह भारत की संस्कृति में निगड़ित है। जैसे मैंने कहा कि वैदिक मंत्र से उसका उद्भव होता है। भारतीय मनीषा इस बात को स्वीकारती है, कहती है कि जो शत्रु भाव है, शत्रुता, शत्रु आपके बाहर नहीं है, शत्रु आपके भीतर है। जब आप बाहर के शत्रु से लड़ते हैं तो आप अपने ही भाई को दुश्मन बनाते हैं, और जब आप भीतर के शत्रु से लड़ते हैं तो आप स्वयं भाई बन जाते हैं। कौन है वे दुश्मन? तो भारतीय मनीषा कहती है कि जो शत्रु है ये षट रिपु हैं, ये 6 दुष्ट, 6 दोष हैं, 6 शत्रु हैं, और ये है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर,
ये 6 शत्रु है, ये शत्रु जब हम पर हावी हो जाते हैं तो हम अपने व्यवहार की बंधुता खो देते हैं। इन शत्रुओं पर अपने को हावी न होने दिया जाए तो फिर समाज में बंधुता सहज ही रह पाती है। और भारतवर्ष में इसके लिए जो सबसे अधिक, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वह मां का है। मां जब संतान को पालती है तो इन 6 दोषों से वह स्वाभाविक रूप से दूर रहती है, तभी वो बच्चों को अच्छा पाल पाती है। और इसलिए चाणक्य ने अपनी नीति में कहा है, सुखस्य मूलम किम, सुख का मूल क्या है? तो धर्म, अर्थ, इसके प्राप्ति से सुख मिलता है, इससे राज्य बनता है। और वो कहते हैं राज्य का मूल है इंद्रिय जय। जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वही राजा बनने योग्य होता है, और वही फिर समाज में इस बंधुता की स्थापना कर सकता है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस बंधुता को भारत के संविधान में इंसर्ट किया वह हमारे सार्वजनिक जीवन में प्रकट हो और फिर वह संविधान में भी दिखे, तो यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात होगी। और इसलिए इस संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, हम आपके सानिध्य के लिए आभारी हैं। हमारे यहाँ सर ने भी जिक्र किया हिंद माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी, मतलब हमारे यहाँ पृथ्वी का भी जो है माता के रूप में मानते हैं। यही संस्कृति हमारी रही है, हमारे राष्ट्र की अध्यात्म रही है। उसके विपरीत जब हम वेस्ट में देखते हैं तो भोग की दृष्टि से पृथ्वी को या जो इन्वायरमेंट है उसको मानते हैं। हमारे यहाँ बंधुत्व के लिए एक वेद में सबसे बड़ा मंत्र है, हिंदव सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितोत भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता, जो कि बंधुत्व के लिए और सामाजिक समरसता पे आधारित है। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद मित्र। Now, I would like to invite our next keynote speaker, Hon'ble Mr. Justice L. Narasimha Reddy, to address the virtual gathering. Over to you, sir. Sir, your mic is on mute. धन्यवाद जी। श्रीमान महेश चंद्र शर्मा जी, यू आर एबल टू हियर मी? या प्लीज। Yes, sir. श्रीमा जी एंड अन्य सदस्यों को मेरा नमस्कार। If you permit, I will speak in English because I will not be able to speak that with that much perfection in Hindi, though I can speak to some extent. Please, you speak in English. Yes. Just now, Sri Mahesh Chandra Sharma ji has given a detailed account of the concept of fraternity, that is Bandhutva, and I think it is comprehensive enough. On this Constitution Day, I congratulate the Debate and Discussion Society for choosing such an excellent topic. Normally, whenever occasions of this nature arise, people will think of very high-sounding concepts, high-sounding philosophies, so that it will appeal to the public at large, and at least will be able to impress a large section of people and attract them to the discussion. All of us are aware that our Constitution has chosen or adopted to itself the 4 human values or human concepts. They are justice, liberty. The fraternity was the one which did not attract
the attention of either our legislators or our executive, or for that matter, our judiciary. As rightly pointed out by Sri Mahesh ji, it was added maybe at a later stage, but it was the initiative of Dr. Ambedkar that made this particular great human value as part of our constitution, of our preamble. Now, if we look into this, for example, justice, social, economic, and political, that is assured in various parts of the constitution as to how each section will be assured of their political rights, the social rights, and all that. And to be more precise, even a substantial portion of the constitution was added in Article 243 for panchayats and the municipalities, providing for reservation of the seats in favor of various categories to promote social justice. I am not about the desirability of that, but the constitutional efforts were made to protect the rights. There is nothing wrong in it. It is a continuous process. Similarly, in the context of liberty, we have got liberty as one of the fundamental rights, and time and again the Honorable Supreme Court has also interpreted that provision, and many a time it has expanded the scope of that. Equality is another part which has received the attention. In fact, the highest amount of attention which was that was received from the Parliament and the constitutional courts was the concept of equality. That was in the context of providing reservations, either those who pressed for reservation in favor of a particular group or those who opposed that. Either way, the battle went on, legal battle and legislative battle. As at how the highest number of amendments to the constitution on a particular aspect would be only about the equality to Articles 14, 15, and 16. All of you are aware of that. And whenever a constitutional provision was made enabling the state to provide reservation, the affected groups went to the courts. When the court turned down any provision, then to overcome that, the constitution was amended once again. So that battle is a continuous one, it goes on. I'm only emphasizing this to show the amount of attention which the three concepts have received from the legislature as well as the judiciary. And public debates, the debates by the juries have also been mostly around those concepts. Fraternity, as pointed out by all our panelists also, it is such a thing that it is according to, this is my personal view, that if you ask me which is the noble one of all the constitutional values, I feel that fraternity is the noblest one. Because whatever be the form of government, whatever be the nature of rules, ultimately a society will achieve respectability, peace, and dignity only the fraternity or bandhutva prevails. Otherwise, the rest of it is the rest of the mechanism in law executive will only help the people either to gather wealth or to protect the wealth which is already possessed by them, or to get positions, or to do so many things, but not aimed at ensuring the dignity and protection to our fellow citizens. So that concept was totally neglected, and a time has come when we should pay our attention to this. Our brother Mahesh ji has cited some slokas. Here also I think there are so many others in our Vedic literature and our cultural heritage which promote the fraternity. For example, Sarve bhavantu sukhinaha, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kachit dukkha bhag bhavet. That is, irrespective of the nature of the person, the class to which he belongs, or to whatever background he has got, sarve bhavantu sukhina. Everybody should be happy and peaceful, and he should not face any difficulty at all. If that is the thinking which is embedded into the minds of the citizens, these narrow approaches will not be there. It is only when, as observed,
the Western thinking, where Western philosophy is come what by hook or crook, enrich yourself, and when the wealth becomes so high, spend it in a way in of your own liking, whether it is going to destroy the society, destroy the nature, destroy the environment and all that. It is only the ill-gotten wealth that has caused all these melodies for the entire society, entire world. Therefore, this concept is the noblest one, and we have to make it more vibrant and felt to be felt by the citizens. It is no doubt very difficult in a society which is virtually divided in vertical, horizontal, and even diagonal lines on the lines of caste, creed, religion, everything. It is difficult to promote this theory. Now, political parties are also vying with each other how best to get nearer to a section by promoting. Now, this one thing we have to see is rights, the basic concept of the Western way of thinking or political science is more and more attention upon rights. That is a right-driven society. Now, whenever you think of a right of a particular individual or a section of people, it is but natural that the person who is comfortable with the right will get some benefit. And that benefit will be at the cost of the remaining section. The degree may vary. Suppose if you are saying that the natural resources or financial resources available in a particular area should belong to me exclusively, or a substantial part of it should belong to me, then naturally I will be depriving the rest of the society or rest of the section of that benefit. Therefore, it will lead to some dissatisfaction and disproportionate positions, and thereby the scope for existence of the fraternity will not be there at all. They are polar opponents, the exclusive right claimed by one and the concept of the fraternity are polar opponents to each other. On the other hand, a pure form of fraternity, what does it say? Here, I have already said, the right enables a person to grab the property which in fact does not belong to him, which is available to rest of the society. In contrast, fraternity makes a person who is already in possession of some resources to part with them for the benefit of others. That is the radical difference between these two concepts. So, in a right-driven society, it will be difficult to canvass about fraternity, but it is being an ideal and most respectable goal. It is worth being canvassed, and there are traces of its being recognized if it is projected in a proper and effective manner. Coming to the judicial part of it, of course, over the past 7 decades or so, hundreds and thousands of decisions were rendered on various aspects touching equality, fraternity, equality, the liberty, social justice, and all that. With my, when I made an effort to go about this, the only decision of the Supreme Court, where the concept of fraternity was referred to, not even discussed in detail, was the one in Raghunath Rao Ganpat Rao versus Union of India in the year 1994. 1994. There, it was a case where a farmer prince who was conferred with the right of the privy purchase was deprived of on account of the amendment to the constitution. During that period, of course, at the time of framing of the constitution, the princes or kings were promised that you just merge your state into the Union of India and you will be taken care of. Once you are taking the entire state, you will be taken care of in the form of some privy purchase and all that. In the year 1969, the privy purchase were taken away by amending the constitution. That was challenged. In that, the Supreme Court made a reference to that. And an observation was that by taking away the privy purchase,
we are bringing about a semblance of equality. That is, you are taking away, you are removing the distinction between some princely persons and ordinary citizens. Therefore, in a way, it promotes fraternity. That was observed in para 109. There also the judgment, the reference was made to the observation made by Dr. Ambedkar. It was said, Ambedkar, he explained this concept of fraternity as meaning a sense of, this is, fraternity means a sense of common brotherhood of all Indians. That is what was aimed at by Ambedkar when the concept was introduced. But how far it was taken in its letter and spirit, that's a debatable thing. Except that this was mentioned in the judgment of the Supreme Court in Raghunath Rao versus Union of India, I did not find any discussion there. Now, in Keshavananda Bharati and many other judgments, the concept of the basic structure of the Constitution was evolved. Now, the Supreme Court said that, yes, you can amend the Constitution, but the amendment should be in such a way that its basic structure is not disturbed. Now, what is basic structure? It was not clearly defined, but different judges have chosen different concepts as constituting the basic structure. For example, Justice Shelat, I think, the Justice Grover, Justice Shelat and Grover, in their common judgment, they treated the supremacy of the Constitution, number one, republic and democratic form of government and sovereignty of the country, number two, secular and federal character of the Constitution, number three, democratic power of between legislation, executive and judiciary, a demarcation of powers between legislation, executive and judiciary, number four, and dignity of individuals secured by various freedoms and basic rights of part 3. These are, according to them, these are the basic structures. Of course, they did not say this is the exhaustive list. Some other judges, for example, Justice Jagan Mohan Reddy has referred to the three, that is sovereign democratic republic, one, justice equal, justice social, economic and political, that is those that are figure in the preamble, and liberty of thought, expression, pay, equality of status and opportunity. But nowhere we will find that fraternity was treated as a basic structure of the Constitution. That maybe it was not argued or not presented so well, but according to me, time has come for us to identify the fraternity as one of the most important facets of our Constitution for promotion. While I can say with my little experience in the field that the recognition of various rights, either of group or individuals, may not be able to bring about harmony in the society, and on the other hand, the advancement of fraternity, even at the cost of causing some inconvenience to individuals or groups, will bring about a harmonious society, and thereby the peace and tranquility will emerge, and that the peace which emerges in such a way will be a long-lasting one and a respectable one. It is not a forcible, it comes out of generosity and broad-based thinking of individuals. That will be, we can translate the ideals under the Constitution, namely of fraternity, only from a paradigm shift in our thinking. We do not have to look to the parliament or for that matter judiciary. First, the citizen should emulate the values, and thereafter, wherever occasion arises, the legislature can address it, or the judiciary can take up and discuss it. But first, the transformation should occur in the minds of the people. Because I will only conclude by referring to a saying by Leonard Hand, one of the renowned judges of the United States. He said, "It is the spirit of liberty or spirit of the thinking. If the spirit
either of liberty or some fraternity, it is there in the minds of citizens. There is no need of any court or constitution. And if he further said that if the spirit is not there, any amount of law, any amount of constitution, any amount of will not be of helpful. Therefore, the discussions like this, and in a broad-based manner, we should spread the concept of the fraternity, so that the a thorough, respectable, and peaceful society emerges. And ultimately, more than that, the the greatness of a nation or a society cannot be gauged from the amount of wealth it has got or the other resources. Their resources are certainly important, they are useful, but the best yardstick to measure the greatness of a country is about the tranquility in the society, which can be achieved only through the fraternity and brotherhood. I am sure that this discussion will further provide opportunities for others to address the vital issue, and it is a continuous process. We can't expect. And one more thing, if enforcement of a right or enforcement of any particular privilege may result in visible consequences. Suppose you get a judgment or get an amendment in such a way that a particular section of the people get the benefit. It is visible, it is tangible. Whereas for promotion of the fraternity, the result is not immediately visible, but is long felt over the period. That sense of fraternity must prevail. And the best way to promote it is to make it part of the curriculum from the initial stages, to teach about the fraternity at a later stage, at a time when the person is fully selfish and he is in pursuit of the unknown wealth, in pursuit of unlimited wealth. If you teach him, if you ask him about fraternity, he will just treat it as a trash. On the other hand, when a person is in his nascent form, in the student form, or at a initial stage, it will be easy for us to inculcate the values, to inspire, make him to know the importance of fraternity. And it is a collective effort by every section of the society, every individual. I once again congratulate the DDC for organizing this, and I thank the organizers for providing me this opportunity. Thank you. Thank you, sir. As you rightly mentioned, the ideas of fraternity, equality, and liberty are key to our constitution, and fraternity being the most important one to ensure dignity to our fellow citizens, that everybody should be treated equally, irrespective of their caste and the background they come from, so that a thorough and a respectable society emerges. We are confident that your address on the importance of fraternity today will kickstart more discourses in the future and will ultimately and soon become a way of life that is embraced by we and the people of India. Now, your insightful queries greatly contribute to the wealth of shared knowledge today. To answer them, we have organized a question and answer session which will be moderated by Shreya and Shantanu. Over to you guys. Thank you so much, Sejal. Good evening, everyone. Myself, Shreya. And me and Shantanu are very grateful to express our immense gratitude on behalf of all the students that we have the opportunity to ask questions to esteemed guests. We have a lot of questions from the students, but because of the shortage of time, we will be taking only few of them. So the first question to you, Mahesh sir, one of a student, Ishan, wanted to ask that from your observation to the Indian society over the time, what role do you think the fraternity has played in uniting and shaping an inclusive Indian society? The question is to me? To Mahesh sir. Ah. Sir, your microphone is... Thank you.
fraternity. The entire country, Himalaya to Kanyakumari. भारत के सब लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। भारत के सब लोग किसी न किसी प्रकार के मेले में, पर्वतों पर, नदियों पर इकट्ठा होते हैं। ये सारा उपक्रम आप सबको मालूम है कि हिमालय से कन्याकुमारी तक भारत में कभी राज्य नहीं रहा। इसके बावजूद एकता रही है। एकता का आधार क्या था? इस एकता का आधार था कि भारत माता के संतानों के रूप में संस्कार जो हमने ग्रहण किए, वे संस्कार हमारी एकता के आधार है। वही भारत माता की जय हमको जोड़ती है। माता की जय से हम विलग होते हैं, तब हमारी बंधुता ढीली हो जाती है, तब हमारा आपस का रिश्ता कुछ विरल हो जाता है। और हमारे समाज में ऐसा बहुत बार हुआ है, आज भी हुआ है। इस कारण से जातिवाद, छुआछूत, लूट खसोट, ये सब व्यवहार में आए हैं, पर इन व्यवहारों को कभी भी भारत ने लेजिटिमाइज नहीं किया है। ये व्यवहार हमेशा नकारे गए हैं। इसी कारण से दुनिया में हमारी सभ्यता और संस्कृति सनातन कहलाती है। जब से मानवता ने आंख खोली है, तब से इस देश पर जो संस्कार प्रारंभ हुए, वे आज भी चालू हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि भारतीयता को जिंदा रखने वाला तत्व ही बंधुता है, जिसको हमने सदियों से अपने जीवन में जिया है। I think, sir, you have beautifully answered the question, which have also touched the other aspects and answered the other questions too. My other question is to Narasimha, sir, from Satakshi. The policy of reservation to some extent acts as a deterrent to the idea of fraternity. How far do you think that the way in which reservation is being implemented must be modified so as to maximize the idea of the brotherhood? That is to me? Yes, sir. It is a very delicate question indeed. Very delicate question. The reservation was certainly contemplated under the Constitution initially for most backward sections, such as scheduled caste and all that. Over the period, its dimension has been increased and the demand is still increasing. How I personally look at it is, reservation, if at all, should be in favor of the identified real weak, whether financially or socially weak person. That should be irrespective of caste, creed, or religion. Then only it will not be in conflict with the concept of fraternity. How it flows now? Suppose a person is really poor. It is the social responsibility of the entire society to make him, to uplift him. For that, the people will not grudge, have any grievance, to extend a helping hand to him. If on the other hand, if somebody claims reservation as of right only on account of his birth or social this thing, irrespective, even if he is otherwise well off and all that, the person who is poor or very weak but not availing that benefit will have a grudge about it. I am not on the legality of that, but it will create a dent in the concept of fraternity, because a sort of grievance, a genuine grievance will be there. Look, I am languishing here, but because of my this ancestry and all that, I am deprived of that. Whereas the other gentleman who is very well off than me, he is knocking away the benefit at my cost. Okay? Then he will have a grievance. Thereby, the scope for spreading the fraternity will not be there in full extent. Therefore,
the best way to implement or to uplift the weaker persons is to identify the weakness or backwardness irrespective of any social background or parental background, then extend him by treating them as our brotherhood, not as belonging to any other section and all that, as part of our society, as our brothers who need a helping hand. And if it extended that, one more thing, a person who gets help in that form will be so grateful to society, and he will tend to extend his helping hand to others, other deserving persons, not to perpetuate for his children, for his this thing and all that. So that broad-based, broad-minded concept will be there, but don't treat this as any opposition to reservation. That is a delicate question. We would not want to go into that. But given a situation where a broad-minded and broad-based recognition of the social responsibility of the entire society to help the weak, if it is extended, that will bring about peace and tranquility and brotherhood. If on the other hand, if it is claimed as of right, a likelihood of friction will be there, and to that extent, the concept of fraternity will receive a dent. Thank you so much. Yeah. Thank you, sir. This is a much debated topic, but you have answered it so nicely to clear our confusions. And I'm seeing much of the students are interested, but we have No, a one shortage more. of... Let me tell you one example. About 5 or 10 years ago, I was watching a TV discussion. There, a member of parliament for scheduled tribe or scheduled caste from Madhya Pradesh, he was a youngster. He came on TV and he said that Constitution provided, but let me tell you, I am not going to claim this benefit for any of my children, to any of them, nor do I claim this benefit hereafter. What he said was, once I got this position, what more do I need when our brothers from various other sections are languishing without any benefit? Therefore, I hereby declare that I do not claim the benefit for my children or anybody, because the cost of others have conferred certain right of me. If that broad-based thinking is there, Right, sir. This is what we are looking forward for your personal experience to enrich our understandings also. I will take it's over to you, Shantanu, to ask the question. सबसे पहले मैं दोनों हमारे जो गेस्ट हैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन था और हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं। उसके पहले मैं अपना एक सवाल महेश जी से जिस पर उनका मार्गदर्शन चाहता हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि राजनीतिक नैतिकता बंधुत्व के लिए कितनी आवश्यक है? क्योंकि जैसा आपने कहा कि मानवीय चेतना बंधुत्व का प्रीकर्सर है। पहले मानवीय चेतना होगी, फिर उसके बाद हम बंधुत्व की बात करेंगे। और मानवीय चेतना कौन पूरी प्रजा में जगा सकता है, वो राज्य और राजा का काम है। और वो राजा तभी करेगा जब उसके नैतिक सिद्धांत मजबूत होंगे। तो जो कि अभी हमें हमारे जो करंट कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स है, वो उसमें विलुप्त दिखता है। तो ये पहले मतलब कितना ज़रूरी है और इसको पहले इस पर और कैसे ध्यान दे सकते हैं और कैसे हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इस दिशा में ले जा सकते हैं कि वो इस चीज़ पर और बल दें? You're mute. राजनैतिकता तो राजनैतिक में नैतिकता इनबिल्ट है, क्योंकि नैतिक नहीं तो केवल राज रह जाएगा। तो नैतिकता विहीन राज ये खतरनाक होता है। इसलिए राजनीति में ही नहीं, हमारी संपूर्ण व्यवहार में नैतिकता चाहिए। नैतिकता का मतलब होता है नीति के अनुकूल चलना। नीति क्या है? नीति है सत्य
सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। तो नैतिकता कहती है सत्य का आचरण करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह नीति है। तो इसका मतलब हो गया कि आप ऐसा कोई व्यवहार मत करो तो दूसरों को दुख दे। और इसको कहा गया, नीति यह है, दूसरों से वह व्यवहार मत करो जो आप स्वयं से नहीं चाहते। और इसलिए आज की भारत की राजनीति में शानू को लगता है कि वो विलुप्त है, इस पर विचार करना चाहिए। आज की राजनीति में विलुप्त है ऐसा नहीं है। इसकी विलुप्तता हमारे समाज में है। समाज में वह विलुप्त हुआ है तो वह राजनीति में रिफ्लेक्ट होता है। राजनीति में प्रतिबिंब है, बिंब नहीं है। तो इसलिए हम सोचें हमारे समाज की स्थिति क्या है। आज राजनीति ने समाज को याचक बना दिया है, मांगने वाला। कोई भी समुदाय सरकार के पास कब जाता है? कुछ मांगने, कुछ दीजिए। और वो देने वाला कौन है? उसके पास क्या है? उसके पास कुछ नहीं है देने को। जो मतदान, मत की मांग करता है, जो टैक्सेस की मांग करता है, जो मांगता है, वो क्या देगा आपको? लेकिन आज जो सब पॉलिटिकल पार्टीज में होड़ लगी है, हम इसको इतना मुफ्त देंगे, इसको इतना पैसा देंगे, इसको इतना राशन देंगे, ये क्या है? यह है जो समाज की आंतरिक भूख है, वह राजनीति में रिफ्लेक्ट है। जब कोई माँ अपने संतान को पालती है तो तुम्हारे बच्चे को मैं खाना खिला दूंगा कोई कहे यदि, तो माँ कहेगी मेरा अपमान करते हो, मैं मर गई क्या? मैं माँ हूं, अपने बच्चे को खुद खिलाऊंगी, तुम क्यों खिलाओगे? और जब सरकार मिड डे मील देती है तो माँ ये नहीं कहती मेरे दादा को तीर्थ यात्रा करनी है तो मैं कराऊंगा, सरकार क्यों करवाएगी? और मांग करते हैं सरकार से कि तीर्थ यात्रा करवाइए। तो हमारे समाज की नैतिकता का क्षरण इसलिए हुआ है कि हमारी पारिवारिकता का क्षरण हुआ है। और ये सारे क्षण राजनीति में दिखते हैं। समस्या ये है कि इन क्षरणों को राजनीति रोकती नहीं है, बढ़ाती। हमें वह राजनीति चाहिए जो सामाजिक क्षरण को रोके। और राजनीति वह है जो सामाजिक क्षरण को बढ़ाती है और तीव्र करती है। और इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम समाज के रूप में कैसे हो जो स्वस्थ राजनीति पैदा कर सके। और ऐसा जो सोचेंगे तो हमें अपने संविधान पर ही विचार करना पड़ेगा। आज संविधान के तौर पर एक इंडिविजुअल है और फिर स्टेट। इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में कोई एजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो इसलिए परिवार के संदर्भ में जो हमने अब तक कानून बनाए हैं, इनकी समीक्षा करनी चाहिए। परिवार के संदर्भ में कानून बनाए हैं वो हमने इंडिविजुअल के पक्ष में और परिवार के खिलाफ बनाए। और जब आप सोसाइटी को कर देंगे इंडिविजुअलाइज, तो व्यक्तिवादी समाज हो जाएगा, तो बंधुता कहाँ रहेगी उसमें? रिश्ते नाते कहाँ रहेंगे उसमें? इसलिए जो दोष हम देखते हैं, राजनीति के दोष हमारे समाज के दोष हैं।
अर्थनीति के दोष हमारे समाज के दोष है, शिक्षा नीति के दोष हमारे समाज के दोष है। हमारा समाज कैसा समाज है? हमारे समाज में तो बेरोजगारी होती ही नहीं थी। बेरोजगारी शब्द पर्शियन है, अनएम्प्लॉयमेंट अंग्रेजी का है, हिंदी का शब्द क्या है? हिंदी में कोई शब्द नहीं है बेरोजगारी के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदी समाज में इस अवस्था की कल्पना ही नहीं है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो माँ के वक्ष में उसका भोजन होता है, वैसे ही कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसके परिवार में उसका धंधा होता है। कोई परिवार ऐसा नहीं है जो उत्पादन, शिल्प या सेवा से वंचित हो। उस समाज व्यवस्था को हमने तोड़ दिया और तोड़ करके अभी जो हमने स्वीकार किया है वह वेस्टर्न मॉडल है, वह पश्चिम का मॉडल है। ऐतिहासिक कारणों से वो आया है, उसे भी कोई फायदा नहीं है गाली देने का, उसका विकल्प देने की जरूरत है। और उसका विकल्प देने के लिए हम सबको साधना करनी पड़ेगी। और हमारी राजनीति में जो दोष दिखाई देते हैं हमको, ये दोष राजनीति में जाकर आप दूर नहीं कर सकते। आप देश के अच्छे नागरिक बन के दूर कर सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसका उपचार बताया है, वो है लोकमत परिष्कार। लोकमत का परिष्कार कीजिए। ये संभव नहीं है कि लोकमत तो अपरिष्कृत रहेगा और अपरिष्कृत लोकमत में से परिष्कृत लोकतंत्र पैदा होगा, ये नहीं हो सकता। इसलिए उनका सिद्धांतहीन मतदान, सिद्धांतहीन यानी अनैतिक, सिद्धांतहीन मतदान सिद्धांतहीन राजनीति का जनक है। तो संभव नहीं है कि सिद्धांत तो नीति विहीन होंगे और नीति विहीन मतदान में से नीतिवाद राजनीति पैदा होगी। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। अपनी बात कहते समय मैं भूल गया था एक बात कहना। इस विषय पर किताबें बहुत कम हैं। बंधुता जो विषय संदर्भ है, इस बहुत ज्यादा पुस्तकें नहीं है, पर एक अच्छी पुस्तक अभी आई है तो मैं चाहता हूं कि आप उसको लिखें, उसको मंगाएं और पढ़ें। इसके लेखक हैं डॉक्टर आकाश सिंह राठौड़ और पुस्तक का नाम है अम्बेडकर्स प्रियम्बल। ये मेन शीर्षक है और सब टाइटल है सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पेंगुइन ने छापी है, ये अच्छी किताब है, पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हमारे पास डॉक्टर राजेश कुमार हमारे साथ हैं और उनका एक सवाल है, तो मैं डॉक्टर राजेश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना सवाल रिस्पेक्टिव गेस्ट से पूछे। डॉक्टर राजेश कुमार। नमस्कार सर। आइए राजेश जी। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यथो धर्मस्ततो जय। Where there is a righteousness and moral duty, there is victory. But on the other side, we see that Supreme Court के जितने भी decisions हैं वो right based concept को propagate करते हैं और कहीं पे भी मतलब रेयरली मिलता है हमें कि वो ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी की या कम्युनिटी बेस्ड लाइफ की परिकल्पना को स्ट्रेंथन करें। मोस्ट ऑफ द टाइम वो करते हैं क्या कि इंडिविजुअल लाइफ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और उस इंडिविजुअल होने की वजह से ही हमारा कहीं ना कहीं मोरल और एथिकल स्टैंडर्ड है वो डाउन होता जा रहा है। जी सर। रेडी सर विल कमेंट। रेडी सर आप इसको कमेंट कीजिए। डॉक्टर राजेश की बात पर कुछ कहिए। रेस्पॉन्ड इट। Will you address it to me once again? Rajesh again.
यथो धर्मस तथो जय है, ये Yeah. सुप्रीम कोर्ट का एम्बलम में। आपका सवाल क्या है? My question is that Supreme Court most of the time focus on the right-based concept and rarely give emphasis to the duty-based concept or duty-based social order. So Yes. yeah. Unfortunately, we have inherited a system, a right-based system in our judiciary, and our constitution also over the period recognized only right-based. Though the emblem reflects the Vedic text of Jaito Dharmas Tato Jaya, what is Dharma? Dharma is a very wide concept. It takes in so many other things. The biggest, the most valuable message there is Sarve Bhavantu Sukinaha, or everybody should be happy. But if everybody is to be happy, the right will not accrue to that. If somebody wants to get a benefit of 1,000 crores, or if he wants to retain the ill-gotten money of 1,000 crores by citing one provision, what can poor Supreme Court do? The law permits it. Law is the one which is made by our legislators, and sometimes it is interpreted. Therefore, as Mahesh ji said, and as I have also indicated, it is a very broad-based thing and a long-run issue. It doesn't occur overnight. It should take place in the very concept of our polity, the way we make the laws, and the way our people react. It should be there in each and every person's mind, the broad-based thinking and thinking welfare of others. 2-3 years ago, you may have seen in Bombay, there are both neo-rich and neo-poor. There were heavy floods. Many high-ended cars were blocked in the floods. They were taken by the slum dwellers to their houses, and they were treated as guests and all that. These people have opened their eyes at that time. अरे जीने का ये भी एक तरीका रहता है कि irrespective of your resources and means, you can be gentle and respectable to others. And the one who is full of resources, neo-rich and fairly rich, he doesn't even his dog doesn't permit others to step in. That is as simple as that. So Supreme Court also, we can't help the situation as long as the right-based system is there. Supreme Court is part of the system. It can't, wherever occasion permits, of course, if the occasion permits, the adjudication can be towards the justice. But if the provisions are clear, it cannot refuse the relief to a person which is purely right-based. न्यायमूर्ति कोका सुब्बाराव ने कहा है, हमारे पास जो है वह कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ है. It is justice according to law. What we do is, courts do justice according to law. Adjudication of disputes is one thing, doing justice is another. Yes, they give decisions. So they give decisions. They give decisions. Adjudication according. We call them justice. Doing justice is one thing, and the adjudication of disputes according to law is another. And many a time the law may be one-sided. It may be treated this way, that way. It may benefit some unwanted sections, cause burden to some others. Yes. Shantanu? सर हमारे पास एक और सवाल है. This is for Justice Reddy. So, sir, this question is from Vakala. Sir, she wants to ask if fraternity as a constitutional value is recognized as part of basic structure of the Constitution by the Supreme Court, what would be the positive consequences that would follow? Yes, if the Supreme Court recognizes the fraternity as a basic structure of the Constitution, now the validity of any law will be tested on the touchstone of the fraternity. Whether the implementation of that law will bring about
any imbalance or will create some benefit to other, an occasion to test it from that point of view. Unless if it is not there, you have to recognize the competence of the parliament, and parliament, if it is competent to do a law, whatever whether parliament or state legislations. Suppose now the states are coming forward with 75% reservation. Tomorrow another may come 98% reservation. So if it is legally competent, they have to recognize. And if it is a case of fraternity, the court may ask, gentlemen, what is the yardstick you are applying? Are you just going by the event of birth, or by social condition, economic condition, or other this thing? Or whether you have taken the interests of the rest of the society into account and framed this law? That will be the difference. If fraternity is required, that is an excellent question. If fraternity is treated as a basic structure, in fact, it should be. If all three, the three can be taken, which are purely individual based, why not this, which is broad based for the benefit of the entire society? And it is not as if the door for inclusion of topics to or concepts to basic structure is closed. Supreme Court time and again said this is only illustrative. It is a broad-based one. Tomorrow, if the situation arises and the people are able to convince, they may treat the fraternity as also one of the basic features, basic structures. If that is done, the parameter for testing the law will be totally different. The court will see whether it is going to benefit only one section or it is going to benefit the entire society as a whole. Thank you very much, sir. So we are, sir, done with the questions, and I think both the speakers have very ably just distilled all the doubts. To the best of our ability, to the best of my ability. I can't say it is final. No, certainly, sir. No. It was a very good session, sir. So I would like to request Sejal to take over the session and just go ahead. Thank you, Shantanu. And thank you to our speakers for patiently addressing the queries of the student. This discussion has given us a lot to think about. To deliver the vote of thanks, I will now invite Assistant Professor Dr. Seema Singh, Faculty Convener of DDS. Thank you so much to both the speaker, and actually it was an excellent session. Or while this more than 1 hour discussion, one thing which I realized that fraternity, which is the last word of the preamble, is fundamental, but it is most neglected. आज मुझे बहुत सारे सवालों का जवाब मिला, and I think it's a landmark program which has been organized by Campus Law Center, Delhi University, because fraternity is a term which has been rarely discussed. जब से मैंने मतलब घूमना शुरू किया इस देश में, या बचपन से जब हम लोगों ने चीज़ों को देखना शुरू किया, I always realize one thing कि भारत के आप किसी भी कोने में चले जाइए, कोई व्यक्ति दूसरे का नाम नहीं लेता. वहाँ पे आप रिक्शे वाला हो, दुकान वाला हो, कभी कोई आप भैया कहेंगे, कभी आप चाचा कहेंगे, कभी आप दीदी कहेंगे, कभी आप भाभी कहेंगे. भारत के किसी भी कोने में आप किसी भी दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं, और उस फ्रेटर्निटी को हम जीते हैं बिना इसको रियलाइज किए कि वो फ्रेटर्निटी हमारे अंदर कितनी डीपली इनग्रेन्ड है. महेश शर्मा जी ने जिसका इतना सुंदर जवाब दिया, और मुझे लगता नहीं कि पूरी दुनिया में फ्रेटर्निटी को इससे ज्यादा खूबसूरती से कोई डिफाइन कर सकता है, जैसे कि आज उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको डिफाइन किया कि हमारे ऋषियों ने बोला कि धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, तो ऑब्वियसली अक्रॉस द ग्लोब हम सब एक दूसरे के नेचुरली भाई बहन हो गए, और उसको हमारी सोसाइटी ने इतने अच्छे से जिया. जो मैंने आपको बताया, बंगाल में ममता दीदी अगर हैं तो यूपी में मायावती हैं, जो कोई बहन जी हैं. आप गुजरात में चले जाइए तो कोई बेन है, कोई अम्मा है, कोई अक्का है. मतलब आपको पूरा इंडिया जो है इस फ्रेटर्निटी में बंधा हुआ मिलता है. सो दिस इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी. बट द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग हैज नॉट बीन डिस्कस्ड और हैज नॉट बीन रिसीव्ड प्रॉपर ऑनर एंड प्लेस. Not only the legal academia,
but in the entire legal discourse and in the entire political discourse. Judgments में इसको कहीं जगह नहीं मिली. और आज जब हम ये सोचते हैं, मुझे लगता है शर्मा सर ने आज इतने सारे सवालों का जवाब दिया है ना, कि अगर हम इसको डीपली एनालाइज करें तो आज सारे सवालों का जवाब हमें मिल गया है. Despite of making so many legislations, still we are not able to give justice. उसका रीजन ये है कि जो सबसे फंडामेंटल है वो तो फ्रेटर्निटी है, एंड फ्रेटर्निटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी. फ्रेटर्निटी को हमने शायद दो तरीकों से समझा है. एक तो ये है कि हम इक्वलिटी आ जाएगी तब फ्रेटर्निटी आएगी, और जो आज एक नई परिभाषा शर्मा सर ने दी कि जब फ्रेटर्निटी आ जाएगी तो इक्वलिटी अपने आप आएगी, क्योंकि कोई भी समाज सेम लेवल पे कभी भी नहीं हो सकता. जो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी है वो एक ड्रीम तो हो सकता है, उसको कुछ हद तक हासिल किया जा सकता है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं होता. एंड फ्रेटर्निटी इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल स्टेट. इसीलिए जब भगवान राम शबरी के जूठे भेर खाते हैं और केवट को गले लगाते हैं, तो उन्होंने इस फ्रेटर्निटी को अपने आचरण से रिफ्लेक्ट किया है. और भारत के इतिहास में ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पे हम पाते हैं कि फ्रेटर्निटी को पढ़ा नहीं जाता, फ्रेटर्निटी को ये समाज रोज जीता है, बिना इस चीज का रियलाइजेशन किए कि हमारे जीन का हिस्सा है. और जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी ने बकुला का सवाल बहुत ही अच्छा था. इट वाज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन कि व्हाट विल हैपन इफ फ्रेटर्निटी इज डिक्लेयर्ड एज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. एंड इट इज ट्रूली, I mean, it should be discussed among the judiciary also, that what is the reason if they have declared equality, justice and liberty as the part of the fundamental basic structure, then why not fraternity? तो मुझे लगता है इस डिस्कशन को, जैसे अभी जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी ने भी बताया कि there are hardly any judgment in which this concept of fraternity has been discussed. So I think the next step is to bring this debate among the judiciary and the lawmakers, because this is a very high time to discuss this very important fundamental concept of fraternity. And I hope कि यहाँ से हम इसको आगे लेकर के जाएंगे. अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी 75 वर्ष मनाने जा रही है, और ये टॉपिक उसमें 100% आए और इसको हम बड़े लेवल पे अक्रॉस द इंडिया डिस्कस करें, इसका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे. महेश चंद्र शर्मा सर एंड जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू, और आई एम वेरी ब्लेस्ड सर. मुझे तो आपसे हमेशा सीखने को मिलता रहता है. मैं जब आती हूँ आपसे कुछ ना कुछ सीख करके जाती हूँ, और आज बहुत अच्छा है कि सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं इनको भी आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. एंड आई एक्सटेंड थैंक्स to my colleagues. Rajesh is here, JP Meena is here, Atma is here, and all above my professor in charge, Professor Alka Chawla, who is always there to support me. और उससे भी ऊपर the entire team of DDS, the program is brilliantly organized. The way you have conducted the program, the questions which you have put, and the way you have asked the question, especially Sejal and Ujjwal, brilliant. Shreya and Shanu, brilliant. And with this, a big thanks to all the listeners also. So I think we have celebrated this Constitution Day in its true spirit. और मुझे लगता है कि जब तक हम, जैसे अभी शर्मा सर ने बोला कि संविधान को उसकी वास्तविक उद्देश्य के हिसाब से, या जिस ढंग से संविधान सभा में डिस्कशन हुआ उसके हिसाब से समझना और पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, तब तक संविधान दिवस की सार्थकता और संविधान की सार्थकता पूरी नहीं होगी. दुर्भाग्य है कि संविधान सभा में डिस्कशन कुछ और हुआ, लेकिन आज जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो हम उसको किसी और लेवल पे ले जाकर के अप्लाई कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विजन और मिशन दोनों ही नहीं था. तो इसी तरीके से हम और अच्छे प्रोग्राम कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइज करें और प्रयास करें संविधान को उसकी ट्रू स्पिरिट में समझने का. इसी के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू from my behalf, and again special thanks to Mahesh sir and Justice Narasimha Reddy ji. Thanks to all of you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, can we have a group photo with our chief guest and all other faculty members? I think Jayaprakash Meena sir wants to add something, sir. हाँ जी जयप्रकाश पूछिए आप. I think the chief guests left. I think both the guests have left. है ना? हाँ. Justice Reddy was getting late and Sharma sir has also left. But anyways, big congratulations to all of you. It was a very very meaningful program. और आप में से जितने लोगों ने इसको सुना होगा, I am very sure, very very sure, that definitely there was so many things to learn
for all of you. Thank you guys, thank you so much, and very soon we will organize a meeting. और इसमें अब जो मुझे ये अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दी है ना मैम? कुछ बाहर के मेंबर्स हैं अभी, कुछ बाहर के अभी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं। कोई बात नहीं, हम लोग इसमें बहुत जल्दी डीडीएस एक मीटिंग करेगा और हम लोग किस तरीके से स्पेशली जो 75 इयर्स का सेलिब्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे का हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, मैं चाहती हूँ कि आप में से हर कोई इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। और वकुला, यू कॉल द मीटिंग, मैं वो मीटिंग मैं लूंगी एंड आई विल सीरियसली एंगेज, आई वुड लव टू एंगेज ऑल ऑफ यू फॉर दिस 75 year celebration of Indian Constitution. Thank you so much, guys. You are brilliant. So I am looking forward to organize more program with your help. And the second one we are organizing on 2nd December. You all are aware about that. Mr. Vadyanathan has already given his consent. तो अब आप तैयारी कीजिए 2nd की, और इस बीच में हम लोग एक मीटिंग करेंगे जिसमें कि मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करूंगी। ठीक है वकुला, शानू, श्रेया, उज्जवल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, नमस्ते और धन्यवाद। ओके, बाय बाय, नमस्कार। धन्यवाद बॉस। Wait, I think the members of DDS can stay back, others can leave. Thank you so much for joining the meeting today. If you're students of Campus Law Center, you can attend the Constituent Assembly debate that is happening on 2nd. I think most of them have left. I see Vinayak Sharma, I see a few others. So you can join us for the Constituent Assembly debate. Okay, he has been removed. अबे अलका मैम भी थे, अलका मैम को निकाला मैंने सबसे पहले। I think